If you have ever sold your car online, you've probably wondered what exactly goes into an inspection. Is it just someone looking at your car, clicking pictures and then deciding the price? Or is there an actual process behind it? Today, we are going to find out because this is my personal car, a 2021 Tata Tiago I affectionately call Neelima. And today, it is going through a Cars 24 inspection. Hello and welcome to Cars 24 Insider. I am Akshat. This is Akash, a resident CJ or car jockey. He'll do the inspection. I'll ask the questions you probably have. No marketing gimmicks, no shortcuts, just the real process. Let's begin. Now, before Akash even touches the car, he comes prepared with an inspection kit. And honestly, this is where most people realize inspection is not guesswork. तो आकाश बताइए आपके इंस्पेक्शन किट में कौन-कौन से टूल्स हैं? सर ये पेन मीटर है, ये पेन के थिकनेस बताता है और आपका ये TTG है, देन आपका ये AC मीटर है, ये आपका OBD है, स्कैनर जो होता है. Inside are specialized tools used to measure paint condition, tire health, engine diagnostics, electronics and overall vehicle condition. Every reading taken from this equipment directly affects how confidently a buyer can bid on the car. Essentially speaking, this process is less about judging the car, rather it's more about documenting it properly. तो आकाश शुरू करते हैं इंस्पेक्शन के साथ. सबसे पहला प्रोसेस इंस्पेक्शन में क्या होता है? सर डॉक्यूमेंट डिटेल्स होते हैं RC फिल करने में. Interestingly, the inspection doesn't start with the car. It starts with the paperwork. Akash first checks the RC, insurance documents and ownership details. सर हम इसके बाद फ्रंट और रियर की फोटो लेंगे. He cross-verifies the VIN number on the vehicle with official records to ensure everything matches. He also checks for duplicate keys because completeness of documentation and accessories plays an important role for buyers later. एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप दोनों चाबी नहीं देते हैं गाड़ी की तो आपके प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है. तो जैसे कि मेरे पास ये ओरिजिनल है और एक घर पे पड़ी है इसके साथ एक और जो मिली थी, तो अगर मेरे पास एक ही चाबी होगी तो प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा. तो प्राइस पे असर पड़ेगा. These kinds of checks also ensure that the ownership transfer happens smoothly without any legal complications. अच्छा, इसमें आप चैसी नंबर भी एंटर कर रहे हैं? हाँ जी, लास्ट के 4 डिजिट. Before touching the car mechanically, identity and authenticity come first. अब देन इसके बाद हम चलेंगे टेस्ट ड्राइव पे. Next, we head out for the test drive, and this is where inspection becomes more technical. टेस्ट ड्राइव जाने से पहले हम आपका OBD लगाएंगे, देन AC मीटर लगाएंगे. Akash plugs in an OBD scanner which connects directly to the car's onboard computer. तो अभी हम गाड़ी का टेस्ट ड्राइव शुरू कर रहे हैं. आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत से कस्टमर OBD लगाने के लिए मना करते हैं, घबरा जाते हैं. तो ये आपके लिए बेटर है, आपके इंजन की परफॉर्मेंस बताता है. ये इंजन की क्या है, स्कैन करता है इंजन को, सेंसर्स हो गए वो कैच करता है. बट ये जरूरी होता है प्रोसेस? जरूरी है, ये आपके लिए भी जरूरी है. Alongside that, an AC temperature meter is used to measure actual cooling performance. अब हम 1 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लेंगे. 1 किलोमीटर की? हाँ जी. ठीक है. During the drive, he evaluates multiple things simultaneously: engine pickup, clutch response, gear shifts, whether they feel smooth or notchy, braking performance, steering feedback, suspension noise, and ride quality. तो अभी आपको इस गाड़ी को असेस करके क्या लग रहा है? अभी तो बिल्कुल ठीक लग रही है. सस्पेंशन शॉकर बिल्कुल ठीक है. Here, the car isn't just being driven; it is being analyzed in real-world conditions. This drive also serves another purpose. It allows the car to run for at least a kilometer, bringing the engine up to operating temperature for deeper checks later. तो जैसे कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, थोड़े ऊबड़-खाबड़ सड़कों में गाड़ी चलाई जा रही है. हाँ जी. तो ये प्रोसेस जरूरी होता है? बिल्कुल सर, सस्पेंशन पता चलते हैं इससे. अच्छा. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी गाड़ी में साउंड बिल्कुल भी नहीं है. तो मतलब अच्छी हेल्थ में सस्पेंशन सही है. Because a car can look perfect while it's parked, but driving it always tells the truth. Once the drive is complete, the inspection moves straight under the bonnet. तो आकाश अब टेस्ट ड्राइव कंप्लीट हो गया, इसके बाद का प्रोसेस? अब हम चेक करेंगे कि इंजन में ब्लो बाय है कि नहीं है. इंजन ब्लो बाय? हाँ जी. Because a warm engine reveals far more information than a cold one. Akash checks the coolant level and condition, battery health and terminals, engine oil level and quality, and any leakage signs from the sump area. Running the car beforehand helps identify leaks or any issues that may only appear after a test drive. Now comes the dedicated engine inspection. The car is started again and observed carefully. Here, Akash checks for stable idling, overheating signs, abnormal vibrations, unusual engine noises, and he also checks for blow-by, which can indicate internal engine wear.
तो आकाश आपने अभी ब्लो बाय चेक किया, उसकी वीडियो बनाई, एग्जॉस्ट स्मोक की वीडियो बनाई। हाँ जी। तो सर अब क्या है, इसमें हम चेक करते हैं कि इंजन में कोई साउंड है कि नहीं है, कि टर्बो चार्जिंग वर्किंग है कि नहीं। जैसे कि आपकी पेट्रोल गाड़ी है, If a vehicle is turbocharged, turbo sounds are also monitored. चेक करते हैं कि कोई साउंड तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है। Another important indicator is the exhaust smoke color, which is observed to detect potential combustion issues. At this stage, the entire HVAC system is also tested. अगर 12 to 18 है तो आपका इनफेक्टेड है, अगर 18 प्लस हो जाता है तो आपका इसे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इससे प्राइस पे असर पड़ता है? हाँ जी। AC cooling, heating, blower speeds and compressor engagement are all verified because comfort system matter just as much as mechanical health to a future buyer. With mechanical checks complete, attention shifts inside the cabin. Everything a driver interacts with daily is tested. तो अभी आप switches और power windows देख रहे हैं? हम चारों पावर विंडो चेक कर रहे हैं कि वर्किंग है कि नहीं है। Power windows, steering mounted controls, central locking, cabin lights, horn and all exterior lighting controls. तो अभी इंस्पेक्शन के इस प्रोसेस में आकाश ने गाड़ी के इंटीरियर के बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेक किया। फिर इसके बाद आपने रिवर्स कैमरा वर्किंग है कि नहीं है, रिवर्स कैमरा, सेंसर, देन की गाड़ी में एयर बैग कितने हैं। इसके बाद और अब इसमें डाली जाती है क्लस्टर की फोटो फिर से कि कोई लाइट तो नहीं आ रही, वार्निंग लाइट तो नहीं आ रही। हमने रूफ लाइनिंग चेक करी कि कोई डैमेज तो नहीं है, कि देन लूज तो नहीं है, जैसे कि अब ठीक है। हाँ। The instrument cluster is inspected for warning lights or error indicators. The infotainment system and speakers are also checked along with the reverse camera and parking sensors. Akash also notes safety equipments like the number of airbags present in the car. Finally, a visual inspection covers seats, floor condition, roof lining and door trims. The goal is simple: no surprises for the next owner. Now only after interior and mechanical checks does the inspection move outside. तो अभी दोबारा से इंजन खुल गया। अभी हम आकाश क्या चेक कर रहे हैं? सर हम चेक कर रहे हैं लेफ्ट की हेडलाइट। अभी हम हेडलाइट, फॉग लाइट, DRL, हाँ, कि कहीं वर्किंग है कि नहीं है, कहीं रिपेयर तो नहीं है, हम वो सब चेक करते हैं। All lighting elements are inspected: headlights, tail lamps, fog lamps, DRLs, indicators and auxiliary lights. Glass components, windshield, rear glass and side windows are also checked for cracks and replacements. Then comes an important structural inspection. The bonnet is opened to examine areas buyers never usually see: apron panels, radiator mounts, firewall, and upper and lower cross members. These areas help identify whether the car has experienced major structural repairs. Exterior panels, including bonnet, boot lid, bumpers, roof, ORVMs, pillars, running boards, and quarter panels are all visually evaluated. Next comes the tire inspection. तो आकाश, ये अभी हम टूल यूज कर रहे हैं। हाँ जी, ये क्या TTG है। TTG। हाँ जी। तो ये बेसिकली टायर के ट्रेड्स को चेक कर रहे हैं कि टायर आपका कितना यूज हो चुका है। Using a TTG or tire tread gauge, Akash measures the remaining tread depth to determine usability. अगर आपके टायर ज्यादा यूज हो चुके हैं, घिस रहे हैं, फट रहे हैं, टायर जैसे कि गाड़ी ज्यादा चलती कम है तो टायर सूख जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं उस पे, तो उस पे का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टायर सर मेन पार्ट है गाड़ी का। सेफ्टी की भी बात होती है, सेफ्टी की भी बात होती है। टायर फट सकता है। Alloys are also checked for bends or damage. Even the stepney is inspected, something many owners forget but buyers definitely notice. Boot condition and storage areas are also documented. Finally, one of the most detailed parts of an inspection: the door weather stripping is gently removed to inspect factory weld points. तो आकाश, ये वाला एक इंस्पेक्शन में एक स्टेप है जिसमें मैंने सुना है कि कस्टमर को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब आप बीडिंग खींचते हैं। तो हाँ जी सर देखो, बीडिंग उतारने का मतलब ये होता है कि हम चेक करते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है। सर देखो, ये जो पंचेज हैं आपके रोबोटिक होते हैं। अगर आपका पिलर रिपेयर होगा तो आपके पंचेज ये दोबारा नहीं बन सकते। कंपनी में भी अगर आप उसको रिपेयर करवाते हैं तो वहाँ भी पंचेज होल ये नहीं बनते। This helps identify whether the car has undergone accidental repairs outside authorized standards. Then comes the PTG or paint thickness gauge. तो अब आकाश, आप शायद पेंट चेक करेंगे। हाँ सर, पेंट चेक करूंगा मैं। इसके लिए टूल है, ये पेंट का बेसिकली थिकनेस मेजरमेंट करता है कि आपकी गाड़ी बाहर से पेंट है कि नहीं। This device measures the paint depth across all panels. Factory paint usually shows uniform readings. Higher values indicate repainting or repaired panels. सर आपका ये वाला गेट पेंट है। And most importantly, repainting does not automatically reduce your car's value. It simply ensures full transparency for buyers. So next time you wonder what exactly happens during a Cars 24 inspection, now you know. It is structured, it is data driven, and it is designed to make selling your car simple and transparent. So if you are planning to sell your car, you can book an inspection on Cars 24. Until then, I am Akshat. This is our CJ Akash. Namaste. That is just one behind the camera.
You are watching Cars 24 Insider. Thank you for watching.